The best of all this world. Okay, when I told you. Hello, Aditya. Can you see? Okay, I think I'm live. I would like to think that I'm live. Yes, I am live. Hi, Aditya. Long time. Yes. Yeah. All right. So, hello, good afternoon, everyone, and welcome to the Hindu editorial analysis brought to you by An Academy, and I'm Vaishnavi, your presenter. So, let me just. Okay, I think we are good. That's okay, Aditya. How did your exams go? Hmm. Okay. Yes, like I said in yesterday's session as well, it all depends on what is your criteria for being better. Okay, so आपके criteria पे depend करता है कि क्या है आपके लिए better. What are you exactly looking for in a college and what are your requirements? It depends on you. Okay, so please make sure that you do your research. According to me, GLC is would be a better option, but again, depends on GLC. A variety of factors as well. Okay, so let's get started. Today is the 13th of December और हम ये आज से शुरू कर रहे हैं. Make sure that you are in the session because the session will be live at 12 p.m. every day from Monday to Saturday, or is it Monday to Friday? Whatever, but Monday to Saturday it will be live. Uh, every day at 12 p.m. So please make sure that you are enrolling in these classes. और एक चीज डिफरेंट होने वाली है. पहले वाले जो हम एडिटोरियल हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करते थे उससे कुछ डिफरेंट होने वाला है इस बार. द डिफरेंस विल बी आज हम वही पैटर्न में लेंगे जो हम पहले पैटर्न में लेते थे. द डिफरेंस विल बी देयर विल बी 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एडिटोरियल. ओके, हम जैसे क्लैट में पूछा जाता है, जैसे एलसैट में पूछा जाता है, जैसे स्लैट में पूछा जाता है, वी विल ऑल्सो बी जैसे एलेट में पूछा जाता है, we will also be answering reading comprehension questions. Okay, we will be looking at it as a reading comprehension passage, and we will be answering 5 questions based on the editorial. Okay, तो ये कल से शुरू होगा. That is something that is, yes, it is not that great of a book. I mean, ये सारे catchy titles वाले जो book हैं, The Subtle Art of Not Giving a, that is also not a great book. Do Epic is also not a great book. I mean, you can you have to be very selective with books. Okay, make sure that you are selective with books and make sure that you're reading books that are, uh, you know, um, because बहुत सारे book हैं and you have limited number of time. Okay, limited amount of time. So please make sure that you are reading books that are, you know, bestsellers or have won awards for. Being great. Okay, so आप उससे अच्छा you can read You Are the Placebo. That is a very nice book by Dr. Joe Dispenza. Shubhra, good afternoon. Hi. Rudest book ever is, again, it is the same thing as being देखो, rudest book ever is, I've read that book as well. So again, it is the same thing saying in a harsh way. Basically, whatever this reality of life is, same thing is being put in a, in not a subtle way, and just talking about how things are and how people are and how you should be and all that. So um
ज्यादा थिक बुक भी नहीं है, so you can read that. It's not that bad. Advised me to attempt CLAT 2024, attempted and scored 60 marks as I was not prepared for GK. My good, Aditya. Yes. So again, this year is not the year for you. It's better that you just for practice. Good job that you, kudos to you that you listened to my advice and you gave the exam. अब आपको थोड़ा सा idea हो गया होगा कि what the feel is. Okay, so you are already prepared for the feel and you know how it is going to and what are the ways it can go wrong and what are the ways it can go right. Okay, what are your areas of strengths and what are your areas of weaknesses. So you already know that now. So that's why I asked you to do it. Sacred Games novel. Like the book. I mean, I've not read that, but it is fiction, right? It is fiction, right? So you can watch the series. Instead of that, आप अरुंधति रॉय का पढ़ो, सलमान रुश्दी का पढ़ो. These are the books that you should be reading, not Sacred Games. Okay. All right. So let's get started with the session. Okay. Yeah, crime drama. So there are better books for crime drama than Sacred Games, right? So you can read those. Yeah, it is fiction though, right? All right. So this is my Telegram channel. If you have not subscribed to my channel yet, please do subscribe to my channel. Right now, the Tapman on my channel is very cool and not much of activities is being seen, but soon we will have a lot of things that will be going on. तो टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने का ये फायदा है. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी कि क्या फायदा है टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने का. तो फायदा ये है कि आपको अगर आप प्लेटफॉर्म पे भी हो, ओके, तो उस पे आपको स्पेशल क्लास के नोटिफिकेशंस मिलते हैं. आपके प्लानर पे स्पेशल क्लास का मिलता है, आपके प्लानर पे आपको प्लस क्लासेस के मिलते हैं. YouTube का नहीं मिलता है, right? And sometimes the links, some people, some students face technical issues with the links on the planner. So that's why for your reference, the channel is there so that you can know कि आप क्या क्या schedule है आज का, every educator क्या क्या classes ले रहे हैं, and based on that you can decide which ones you want to go live with and which ones you want to attend later. Okay, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे ये जो सेशंस हो रहे हैं, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, इट इज अ मस्ट दैट यू वॉच इट लाइव. अगर नहीं हो पा रहा है तब आप रिकॉर्डिंग देख लेना, लेकिन लाइव देखने से बहुत सारे फायदे हैं, बिकॉज वी आर मेकिंग सेंटेंसेस ऑन इट एंड आई विल बी टेलिंग यू कि क्या सही ग्रामर होगा, क्या सही स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का. यू विल बी एबल टू यूज द वोकैबुलरी एज वेल. ओके, सो बहुत सारे फायदे हैं. दोज हु हैव अटेंडेड दी सेशंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, they will know. Okay, so please give it some time and let it grow on you. You will see the benefit of it. Okay, so the name of my telegram channel is unacademy underscore vaishnavi underscore clat. अगर ऐसे नहीं मिल रहा है, so you can scan this QR code, it will take you straight to my channel, or you can simply type Vaishnavi Pandey 31. You will be able to on telegram you will be able to find my channel. All right. All right, so let's get started with the vocabulary. ठीक है, vocabulary से शुरू करते हैं. All right, तो आज बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स एक दो हैं, कुछ कुछ वर्ड्स जो हमने पहले नहीं देखे हैं. So let's get started with the first word. Okay, the first word, and please make sure that you are making sentences with this word. Okay, जैसे ही आपको समझ में आ जाए इसका meaning, please make sure that you are making sentences on it. Okay, Ashu, hi. Hello. And these again, this class is not just important for CLAT और ALET. अगर आपने दे लिया है तो ऐसा नहीं है कि अब ये सेशंस का कोई वैल्यू, कोई महत्व नहीं है. इन सेशंस का अभी भी बहुत, दे होल्ड अ लॉट ऑफ वैल्यू, बिकॉज इंग्लिश तो सब जगह आती है ना.
all exams have English and all exams have vocabulary, and this is the fastest way of strengthening your vocabulary apart from root word method. Okay, जो भी हम कर रहे हैं वो भी करते हैं, लेकिन this is another way of getting these words into your vocabulary power list. Okay, so thank you, Aditya, thank you. Yes, Aditya, these classes are going to happen regularly, daily hoga, and all the difference it will make, ma'am. Bill, don't talk. Seema, could you tell me the author of the book? Not heard of this one. No idea, Seema. मुझे ज्यादा idea नहीं है इस book के बारे में, मैंने नहीं पढ़ा है ये book. Like I said, there are a lot of books even I have not read. Okay, so imagine, I mean, अगर मैं कुछ कोई book बोल रही हूँ पढ़ने के लिए, that means out of the limited number of books that I have read, these are the great books. Okay, so you don't have to take that leap of faith with books. ठीक है? Uh, no idea, Seema. मुझे नहीं आइडिया है कैसा है बुक. Probably I can give you some feedback after reading about the book a little, लेकिन if you are starting, if you are a reader, अगर आप beginner हो तो I would suggest कि आप fiction से शुरू करो. Okay, fiction से शुरुआत करना. All right, so the first word that we have is restoration. Okay, restore करना कोई चीज को is the verb form. इसका verb form क्या होगा? Restore. Okay, is the verb form. Okay, so restored, restoring, restores. Okay, is the verb form. Restoration, tion आ गया तो this is definitely a noun. तो इसको ये किस चीज को कहते हैं? The action of returning something to a former owner, place or condition. कोई चीज को जहां पर वो पहले था, okay, या जो उसका जिसके possession में वो पहले था, या जिस condition में वो पहले था, उस condition में, उस position में, उस ownership में आप उसको वापस से ला रहे हो, that is called restoration. Okay, so the action of returning something to a former owner, place or condition, okay, is restoration. Okay, so restoration work is going on the building. Okay, so that means the building is being restored to its former state or condition. Okay, then we have statehood. Statehood is a noun. Okay, the status of being recognized independent nation is statehood. Okay, अगर कोई स्टेटस मिल जाता है किसी नेशन को, ओके, कि वो इंडिपेंडेंट है, ओके, एंड इज नॉट अंडर द रूल ऑफ अनदर स्टेट और अनदर कंट्री, दैट इज स्टेटहुड. ओके, सो मतलब इंडिविजुअलिटी, इंडिपेंडेंस मिल जाती है फ्रॉम एंड रिकग्निशन मिल जाता है दैट इट इज अ सेपरेट स्टेट और कंट्री. ओके, इंडिपेंडेंट नेशन. ओके, सो दैट इज स्टेटहुड. मूविंग ऑन टू, तो ये हमारा थोड़ा नया वर्ड हो गया. ओके, एब्रोगेट. एब्रोगेट भी हमने पहले देखा है, लेकिन लेट्स कंसिडर इट एज अ न्यू वर्ड बिकॉज हम ये सेशन फिर से शुरू कर रहे हैं. सो another day, another dawn. All right. um will you give your telegram id? There I can communicate with you about books. um सीमा, यू कैन ज्वाइन माई चैनल. ठीक है, आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद वी विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. ठीक है. हाय गुरनूर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज. व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज गुरनूर. वेलकम गुरनूर. Immediate restoration of statehood in Jandiala is very important. Very nice, very nice, very nice. Why did you delete it? Awadh Potter. Hi, good afternoon. It's a Potterhead. Wingardium Leviosa. All right, let's get started. Jammu and Kashmir. Okay, got it, got it. Good job, Aditya. Good sentence. Now, abrogate का मतलब क्या होता है?
रीअपील और डू अवे विथ, ओके। कोई लॉ को अगर आप एक लॉ को या कोई राइट को या फॉर्मल अग्रीमेंट को, ओके, आप उसको क्या करते हो, आप उसको रहने देते हो, आप उसको छोड़ देते हो, ओके, यू लीव इट आउट फ्रॉम इट बीइंग अ लॉ और अ फॉर्मल अग्रीमेंट और अ राइट, दैट इज टू एब्रोगेट समथिंग, ओके। तो आप उसको यू डू अवे विथ मतलब क्या होता है कि उसको हटा दिया जाता है, ओके, फ्रॉम, इफ इट इज अ राइट, उसको राइट के सेक्शन से हटा दिया जाता है, लॉ के सेक्शन से हटा दिया जाता है, फॉर्मल अग्रीमेंट के सेक्शन से हटा दिया जाता है कि दिस इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल, ओके। So that is abrogate, okay, and it is verb form, that means you can change it to abrogated, abrogating, abrogates, okay. All right, moving on to the next one, incongruous, okay. Incongruous is an adjective. Gurnoor, guys, start making sentences. I don't want just to see Aditya making sentences. I want all of you. Seema, you as well. Avadh, you as well. Ashu, Yash, please make sentences on the words that we have discussed already, okay? Incongruous is an adjective जिसका मतलब होता है not in harmony or keeping with the surroundings or other aspect of something, okay? So basically अगर कोई चीज out of place है, okay? So out of place is the आउट ऑफ प्लेस, वो मतलब उस प्लेस में फिट नहीं बैठ रहा है, ओके। कोई सिनेरियो में फिट नहीं बैठ रहा है, कोई सिचुएशन में फिट नहीं बैठ रहा है, कोई प्लेस में इट इज नॉट फिटिंग वेल, सर्टेन, इट इज नॉट बीइंग इन हार्मनी विथ द सिनेरियो, ओके। सो नॉट इन हार्मनी, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, harmony, okay. Incongruous is something that does not just fit, okay, in a certain place. Hmm. कोई नहीं, ऑल राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज बाइफोकेट। बाइफोकेट का मतलब क्या होता है, बाइफोकेट इज अ वर्ब, ओके। सो बाइफोकेटेड, बाइफोकेशन, ओके। सो बाय दैट मींस डिवाइडिंग इट इनटू टू, ओके। सो टू, divide into two branches or forks, okay. So something that divides itself into two branches, okay. So this side as well as this side, okay. So that is bifurcation, all right. Or it can just mean a certain thing having two branches, okay. So there are two branches of a certain thing, okay. So that is bifurcate karna, okay. Basically splitting things into two halves, okay. So that is bifurcate. Verb form, fruition. Next word is fruition. फ्रूटिशन इज अ नाउन, ठीक है। फ्रूटिशन का इज अ नाउन जिसका मतलब होता है द रियलाइजेशन और फुलफिलमेंट ऑफ अ प्लान और प्रोजेक्ट, ओके। ये भी हमने पहले किया है, ओके। सो दिस प्लान हैज नॉट कम टू इट्स फ्रूटिशन, ओके। दैट मीन्स अभी तक हम ये प्लान फाइनल अपने फुलफिलमेंट में नहीं आया है, ओके। सो द रियलाइजेशन और फुलफिलमेंट ऑफ अ प्लान और प्रोजेक्ट इज फ्रूटिशन, ऑल राइट। दिस इज अ नाउन, ऑल राइट। सो द अगर कोई प्लान कंप्लीट हो जाता है, अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, इट इज डन, देन इट इज टू इट्स फ्रूटिशन, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज erstwhile. erstwhile का मतलब आपको पहले ही से पता होगा, बट जस्ट सेइंग इट अगेन, erstwhile is former, okay. So former leader, erstwhile leader, okay. Formal representative, former representative, erstwhile representative, okay. So erstwhile is former, all right. Then we have militancy, okay. Militancy is a noun. Militancy is a noun, guys. Oh, what is happening with my oh, okay. All right, sentences, sentences, Aditya, sentences. Good news, sentences. Mm-mm-mm-mm. The chocolate is bifurcated by our mothers for me and my brother. For my brother and I. Very nice. Very for me and my brother. That is fine. Good news. Good job. Very nice. All right.
गुड जॉब। मिलिटेंसी का मतलब क्या होता है? द यूज ऑफ confrontational or violent methods in support of a political or social cause. Okay, कोई social या political cause के लिए violent methods का use करना is called militancy of the issue or of the policy or something. Okay, so militancy कोई भी social या political cause के लिए आप क्या कर रहे हैं? Confrontation या violent methods का प्रयोग कर रहे हैं, that is militancy. Okay, uh, so this is also a word that we have seen before. Okay, next is disenchantment. Okay, so there's a movie also, Disenchanted. Okay, so disenchantment is basically आप किसी चीज से पहले, let's say कोई चीज को आप बहुत ज्यादा एडमायर करते थे, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, या यू हैड सम सॉर्ट ऑफ लाइकिंग टुवर्ड्स समथिंग. ओके, तो जब वो खत्म हो जाता है, जब दैट्स व्हाई पीपल से यू शुड नॉट नेवर मीट योर हीरोज. ओके, जब आप अपने हीरोज से मिलते हैं और उनको रियल लाइफ में देखते हैं कि ये भी ह्यूमन है, and they are also miserable in ways that you did not expect them to be. Okay, because आप उनको phenomenal समझते थे and all that. So you get disenchanted. Okay, आपको disenchantment हो जाता है when you meet your heroes. Okay, so disenchantment is that. Okay, तो अगर आप पहले किसी चीज को admire करते थे and then the illusion completely, वो पर्दा हट जाता है आपके नजर से कि you are completely biased towards that personality or that person, कि he is the greatest or she is the greatest, she is the greatest or he is the greatest. Okay, and then you finally realize no, they also are flawed in some ways, or you are disappointed with certain things that they said, then you are like, oh god, no, not a hero. Okay, or not the person I should have admired all these years. Okay, so disenchantment is the noun form. इसका मतलब क्या होता है? Feeling of disappointment about someone or something you previously respected or admired. Okay, a feeling of disappointment about someone or something you previously respected or admired. Disillusionment. Okay, disillusionment is another word for it. Okay, आ जाएगा दिसंबर में ही, probably आ जाएगा गुरनूर, दिसंबर में ही, most likely end of December you will it will be announced. Okay, okay, all right. Next is डिसइंचांटमेंट को हम डिसइल्यूजनमेंट भी कहते हैं. ओके, डिस मतलब वो हट गया. ओके, इंचांटमेंट वो जो फैसिनेशन था वो हट गया. ओके, इल्यूजन जो था आपके आंखों के ऊपर वो हट गया. ओके, दैट इज डिसइंचांटमेंट. नेक्स्ट वी हैव पार्टेक. In 1990s, the erstwhile state Jammu and Kashmir was in incongruous state. Very nice, Aditya. Short and sweet, very nicely done. Class captain is erstwhile representative of the class. Very nice, Shubhra. Makes sense. Okay, good job. Very nice. Good. Then we have partake. अगर आप, if you're partaking in an activity, you are partaking in a session, that means you're joining in. Okay, so I urge you to partake in these sessions. Okay, in these online sessions. Okay, so that is partake. Moving on to separatist. Okay, the next word is, तो हमने इस section में देख लिया restoration, statehood, abrogate, incongruous, bifurcate, fruition, erstwhile, militancy, disenchantment, and partake. All right, partake is just to join in. All right. सेपरेटिस्ट भी हमने पहले देखा है, बट सेपरेटिस्ट इज अ वर्ड दैट हैज बीन अभी बहुत ज्यादा इंडियन वोकैबुलरी में यूज हो रहा है. ओके, इट इज अ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड दीज डेज. ओके, बिकॉज बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जिसमें सेपरेटिस्ट भावना दिख रही है. ओके, so a person who supports the separation of a particular group of people from a larger body on the basis of ethnicity, religion और जेंडर. ओके, तो बेसिकली लार्जर बॉडी हो गया इंडिया. अगर कोई स्टेट बोल रहा है कि हमें इंडिपेंडेंट, कोई स्टेट के लोग बोल रहे हैं कि हमें अपना एक अलग स्टेट चाहिए, वी डू नॉट वांट टू कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ
Indian government. Okay, so that bhavna is called a separatist ideology or separatist view of the whole issue. Okay, कि एक ही solution है इसका कि we separate ourselves from the nation. Okay, so that is a separatist mentality. Okay, so robust भी हम बहुत बार देखे और बहुत देखेंगे. Robust का मतलब आज ही जान लो. Okay, this is something that has been used plenty of times. Okay, robust is something that is used plenty of times, and especially in editorials आप देखोगे. Strong and healthy, vigorous. Okay, so robust is energetic. Okay, so adjective है energetic. Okay, vigorous. Then is contestation. Okay, contestation is contest करना. Okay, contest करना is the verb form, contestation is the noun form. Nation आ गया, tation आ गया, तो it is the noun form. The action or process of disrupting or arguing. Okay, so कोई भी ऐसे process को जो disrupt कर रहा है या argue कर रहा है. Okay, so that process is called contestation. Okay, disputing, sorry, not disrupting, disputing or arguing. Okay, disputing or arguing. Okay, किसी चीज पे अगर आप अपने views argue कर रहे हो. Okay, कि this is not right, this is something that should be challenged, this is something that should not be considered. Okay, these are our problems and this is not okay, so you are in a contestation. Okay, and finally, we have grievance. Grievance is a real or imagined cause for complaint, स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट. ओके, ग्रीवेंस क्या होता है? एक रियल या इमेजिन कॉज फॉर कंप्लेन होता है. ठीक है, या तो आपको आपके साथ सच में कुछ हुआ है या आपने इमेजिन किया है कि आपके साथ कुछ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है. इन बोथ द केसेस इट इज कंसिडर्ड अ ग्रीवेंस. ओके, कि आपको कुछ कंप्लेन है, आपको कुछ इश्यूज है किसी सर्टेन पर्सन से या पॉलिसी से या इंस्टीट्यूशन से. दैट इज योर ग्रीवेंस अगेंस्ट दैट person, policy, institution. Okay, so a real or imagined cause for complaint, especially unfair treatment. और especially इसमें क्या आता है grievance में? unfair treatment, कि उनके साथ सही treatment या fair treatment नहीं हुआ है. All right, that is grievance. Okay, I got a feeling. Ooh. I had a feeling of disenchantment when I approached a person whom I admired a lot. Very nice, Aditya. Yes, exactly what happens. Exactly that. That's like the whole story of why you should never meet your heroes. All right. Okay, so we would like to congratulate CLAT's 2024 topper, AIR 27, Shiny Varma. One of our students, and then we have 25 plus ranks within AIR 1000. These are our students who have cleared CLAT with flying colors, and we are proud of all of them. So there is an opportunity for you to get अभी unboxing offer चल रहा है जिसमें आपको 30% ऑफ मिल रहा है प्लस 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल रहा है. किसमें? Unacademy के प्लस सब्सक्रिप्शन में. This is the amount that you will be saving, so it is a very very good opportunity guys. बहुत अच्छी opportunity है कि आप अभी अपने next year का planning कर लो and you subscribe using my code Vaishnavi10. Okay, this offer is valid till from 11th to 16th. Use my code Vaishnavi10 to get the maximum discount. Okay, store पे जाना Unacademy के and use my code Vaishnavi10. All right, moving on to another offer that is 30% off plus 6 months extension मिल रहा है CLAT के iconic subscription के साथ. Again, this offer is also valid from 11th to 16th. You can again use my code Vaishnavi10 to get maximum discount. All right, then there is a batch that is called Prarambh batch, which is for freshers for CLAT 2025 के freshers के लिए है. I am taking English language in this batch, so if you want to enroll yourself in this batch, so freshers for 2025 अगर आपने पहले नहीं prepare किया है CLAT के लिए, तो this batch is for you. You can use my code Vaishnavi10 to enroll yourself in this batch with either plus or iconic subscription. You will get maximum discount. Target NLU is a droppers batch for CLAT 2025.
एस्पिरेंट अगर आपने पहले लिया है और आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिस बैच इज फॉर यू. अगर आपने ड्रॉप लिया है और 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिस बैच इज फॉर यू. अगेन यू कैन यूज माय कोड Vaishnavi10 टू enroll yourself in this batch. CLAT Assure is an assurity from our side कि अगर आपका CLAT नहीं निकलता है 2025 तब तक हम आपके, जब तक आपका CLAT नहीं निकलता है, अगर आपका 2025 नहीं निकलता है तो हम आपके साथ हैं. Here these are the terms and conditions for this offer. Okay, कि you are supposed to submit the admit card for CLAT 2025 exam. Minimum 300 hours of watch time होना चाहिए. तो next year आपको 1 साल का plus subscription absolutely free मिलता है. Okay, so this offer is valid till December 31st. So hurry hurry. क्लैट आइकॉनिक प्रोग्राम के फायदे क्या हैं? दो तरह का प्रोग्राम है जैसे कि आपने देखा है, प्लस और आइकॉनिक. ओके, सो प्लस में इज अ बेसिक प्लान जिसमें आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, ई नोट्स मिलते हैं. ऑल दिस यू गेट इन आइकॉनिक. प्लस आपको रेज अ हैंड फीचर मिलता है, लाइव मेंटरिंग सेशंस मिलते हैं, डिटेल फिजिकल नोट्स दैट विल बी डिलीवर्ड एट योर डोरस्टेप, प्रिंटेड फुल लेंथ मॉक टेस्ट दैट विल बी डिलीवर्ड एट योर डोरस्टेप. You will be able to attend offline mock test at our Academy Center. All right, so let's move on to the editorial. Pens and highlighters out, everyone. Pens and highlighters out. Hi, Ravneet. Hi. Bonjour, Ravneet. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Voilà. Okay. All right. As with elections, so the heading that is given over here is welcome direction. Okay, so matlab this is a positive. Okay, this is something that the author is, the title says that it is going to be positive. Okay, कुछ अच्छा होने वाला है इस editorial में. Okay, कुछ अच्छी बातें होने वाली है इस editorial में. Something that is nice, something that is great, something that is good. All right, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, conclusion क्या दिया हुआ है. Conclusion दिया हुआ है, as with elections, SC should, Supreme Court should have given a deadline. देखो, एज विथ इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट शुड हैव गिवन, तो यहाँ पर थोड़ा सा रेजर्वेशन है. ओके, कि ये भी करना चाहिए था, कि डेडलाइन देना चाहिए था फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड. ओके, तो इलेक्शंस के साथ जैसा होता है इनको ये भी करना चाहिए था, मतलब ये नहीं हुआ है. ओके, दिस इज समथिंग, इट इज अ वेलकम डायरेक्शन. डायरेक्शन सही है लेकिन कुछ कुछ चीजें और होनी चाहिए थी. सो दिस इज द इंटायर एडिटोरियल कि एक चीज सही है, ठीक है, इट इज गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन बट देयर इज समथिंग लैकिंग. ओके, समथिंग मिसिंग दैट शुड हैव बीन डन. ओके, सो दिस बिकम्स द कंक्लूजन. All right, then we have the main idea. Main idea, let's start. In its conclusion, in the judgment that, in its conclusion, in the judgment that upheld the decision to abrogate the special status, okay, of Jammu and Kashmir under Article 370, the Constitution Bench of the Supreme Court expressly directed that the Election Commission of India, ECI, must conduct elections to the Legislative Assembly of J&K by September 30th, 2024. So basically, जो elections को they had done away with elections, okay, वो अब elections वापस आ रहे हैं कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में. okay, तो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिसाइड किया है कि इलेक्शन होगा वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एन.के का by September 30th, 2024. So this is something that is good, that there is again going to be election. So main idea ये है. All right. Author is asserting that the process is devoid of something which is important. Yes, yes, absolutely. Absolutely. There is considerable contestations between incumbents and the opposition parties on communal rights. Very nice, Aditya. Brilliant. Good job. You're getting better and better every day. Nice. All right. So let's move on to the rest of it. Okay, so basically ये हुआ है. It is welcome. Okay, the author is saying that it is welcome that the court has set a deadline to conduct the long delayed elections in J&K
which has been under spell of governor's rule and president's rule since June 20th, 2018 and without a legislative assembly. तो उनका legislative assembly भी नहीं था उनमें, वहां पर governor's rule और president's rule चल रहा था since 2018. और ये अब this is a welcome move कि अब वहां पर elections फिर से होंगे. Okay, लेकिन यहाँ पर उसके बाद फिर there is a contradiction over here, but it is also incongruous that the judgment does not press the government to restore statehood to the bifurcated union territory, a promise that has been conveyed by the solicitor general but has yet to gain fruition. Okay, तो और एक चीज यहाँ पर साथ में होना चाहिए था इसके कि यहाँ पर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड नहीं हुआ है. ठीक है, बाइफरकेटेड यूनियन टेरिटरी जैसा प्रॉमिस किया गया था, सोलिसिटर जनरल ने प्रॉमिस किया था, वो अभी तक नहीं हुआ है. ओके, इनको स्टेटहुड नहीं दिया गया है, अभी रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड नहीं दिया गया है. दैट इज समथिंग दैट वाज आल्सो एक्सपेक्टेड बट इज येट टू बी सीन एज अ फुलफिल्ड प्रॉमिस. अभी तक फुलफिल नहीं किया गया ये प्रॉमिस. ओके, द बेंच रिमार्क्स दैट direct elections cannot be put on hold until statehood is restored, but it could have directed the union government to restore statehood and conduct elections by a specified date, as there remains no reason for the continuance of J&K as a union territory. Okay, तो इनको okay, so basically यहाँ पर देखो ये वाला बहुत important है. देखो, द बेंच रिमार्क्स, ओके, बेंच ने क्या रिमार्क किया कि द डायरेक्ट इलेक्शन, ओके, डायरेक्ट इलेक्शन कब तक नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी पुट ऑन होल्ड. ये अभी होल्ड पे नहीं रखा जा सकता है, डायरेक्ट इलेक्शन को होल्ड पे नहीं रखा जा सकता है और वेट नहीं किया जा सकता है कि स्टेटहुड जब रिस्टोर होगा तभी इलेक्शंस होंगे. लेकिन ये ना करके, ओके, ये ना करके ये कह सकते था, ये कर सकता था बेंच कि इट कुड हैव डायरेक्टेड द यूनियन गवर्नमेंट, ये डायरेक्ट कर सकते थे यूनियन गवर्नमेंट को कि रिस्टोर करो भाई उनका स्टेटहुड. ओके, एंड कंडक्ट इलेक्शंस बाय स्पेसिफाइड डेट. तो ये करके उसके बाद फिर वो डायरेक्ट कर सकते थे कि अब इलेक्शंस इस स्पेसिफाइड डेट में कंडक्ट कर देना चाहिए. ओके, एज देयर मीन्स, और कोई रीजन नहीं है कि अब इस जेएनके का एज अ यूनियन टेरिटरी कंटिन्यूएंस नहीं हो सकता है. ओके, so कोई रीजन नहीं बचा है, so that is something that should have been done. Okay, this is the should have been done. Okay, यहाँ पर however the author is saying that it is welcome that the court has set a deadline to conduct elections, लेकिन this is the problem. Okay, this is something that was that could have been done as well. Okay, okay, restoration of statehood is an important measure as the guarantees a degree, as this guarantees a degree of federal autonomy to the province. Okay, that should allow the elected government to be able to better address the concerns of electorate that depend on the representative of the union government. Okay, तो देखो ये अब ऑथर बता रहा है कि क्यों करना चाहिए था ऐसा. ओके, द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर देम टू रेस्टोर इट टू स्टेटहुड. ओके, ये एक इम्पोर्टेंट मेजर है क्योंकि ये गारंटी करता है, फेडरल ऑटोनॉमी गारंटी करता है टू दैट प्रोविंस. ओके, कि आपके पास फेडरल ऑटोनॉमी है, ये गारंटी करता है क्या, स्टेटहुड. ओके, तो ये और इसी की वजह से इलेक्टेड गवर्नमेंट को अलाउ करता कि वो बेटर एड्रेस कर सकते थे अपने कंसर्न्स इलेक्टोरेट में, दैट डिपेंड्स ऑन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. ओके, तो बहुत सारी चीजें से जुड़ी हुई है, दैट्स व्हाई इट वाज समथिंग दैट वाज इंपॉर्टेंट. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब अगले पैराग्राफ पे जाते हैं. J&K remains among India's most conflict prone region, partially due to historical reasons related to integration of the erstwhile princely state into the Indian Union, and later due to accumulated grievance over the conduct of democratic process in the erstwhile state. Okay, तो दो reason किसके वजह से, the author is saying there are two reasons why this state J&K remains a conflict prone area. Okay, conflict prone area मतलब ऐसे एरिया जहां पर बहुत ज्यादा conflict उत्पन्न होती है. Okay,
look at me. उत्पन्न ओके उत्पन्न होती है। दो रीजंस क्या बता रहा है, एक तो हिस्टोरिकल रीजंस है कि ये इंटीग्रेशन हो गया, पहले प्रिंसली स्टेट था, यूनियन इंडियन यूनियन में इसका इंटीग्रेशन हो गया, दैट इज समथिंग दैट इज स्टिल अ इशू ओवर हियर, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी होती है। एंड उसके बाद accumulated grievance, okay, मतलब accumulated unfair treatment का जो over the conduct of democratic process in the erstwhile state, okay, पहले जो democratic process था, that also added to the grievance, okay, उनको already there was a conflict because of historical reasons, and the grievances piled up because of the democratic processes in this state, okay. Oh wow, Kai. Kai, are you Kai from I mean, do you mean the same Kai from Beyblade? Because he was my first crush ever. Thanks, Gunu. Okay. कौन सा यूज करें? All right. तो अब क्या बोल रहा है, इवन व्हेन पीरियोडिक एंड रेगुलर इलेक्शंस वर कंडक्टेड ड्यूरिंग द हाइट ऑफ द मिलिटेंसी, ओके, तो पीरियोडिक और रेगुलर इलेक्शन जब हाइट ऑफ मिलिटेंसी था, वहां पर वायलेंस चल रहा था, उस टाइम भी जब रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे थे, पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वैली, ओके, बहुत पार्ट ऑफ द वैली में पार्टिसिपेशन बहुत कम थे, डिनोटिंग द डिसएंचांटमेंट विद द पॉलिटिकल सिस्टम, ओके, तो उससे क्या पता चलता था कि पॉलिटिकल सिस्टम से इनका इनका इल्यूजन, वो भरोसा और ये सब उठ गया है, ओके, बट थिंग्स टुक अ change for the better since the early mid 2000 or mid 2000 से things changed, okay, when the electoral participation improved, ठीक है, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इंप्रूव हो गया जनता का, एंड जे एंड के सिटीजन्स began to partake in democratic process to get their concerns addressed before agitation and protest, including by separatists over security policies, and later steps taken by the Bharatiya Janata Party government led to the current state of affairs, okay. जब सिचुएशंस इंप्रूव होने लगी, ओके, मिड 2000 से सब पार्टेक करने लगे, उनको लगा कि दे स्टार्टेड फीलिंग दैट देयर इज अ पॉइंट कि दे कैन एड्रेस देयर कंसर्न्स, ओके, कि जो जो इनको कंसर्न्स हैं एजिटेशन और ये प्रोटेस्ट से, सेपरेटिस्ट भी पार्टिसिपेट करने लगे इलेक्टोरल सिस्टम में, क्योंकि उनको पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसीज और ये सब चीजों के बारे में दे हैड कंसर्न्स, और उसके बाद फिर बीजेपी गवर्नमेंट लेड टू द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, ओके, तो जब चीजें ठीक होने लगी थी तब इलेक्शंस बंद हो गया, जब पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा था वोटर्स का तो इलेक्शन बंद हो गया, ओके, दैट इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। In the last 5.5 years, local government elections have been held with varying level of participation, indicating that the mood in the valley has been against the measure that have been implemented since 2018. Okay, तो अब देखो क्या बोल रहा है कि लास्ट 5 इयर्स में क्या हुआ है, 5.5 इयर्स में लोकल गवर्नमेंट जो है इलेक्शंस में वो वेरियस लेवल पे वेरिंग कर रहा है पार्टिसिपेशन उसका, ठीक है, और ये दिखाता है सबका मूड, ओके, मूड ऑफ द वैल्यू, ओके, कि अ, कुछ लोग अगेंस्ट हैं कि क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या पॉलिसीज हो रहा है, तो इसीलिए कोई पॉइंट नहीं है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि वी नीड चेंजेस, तो फिर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड ऑल दैट, सो देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी इन पार्टिसिपेशन सिंस 2018, ओके, और फाइनली बोल रहा है, India's unique selling proposition as a leader in the global south remains its robust conduct of formal democratic process, and which in itself is important for conflict resolution in place such as Kashmir. तो इंडिया जाना जाता है कि ग्लोबल साउथ में it has got a huge impact कि इंडिया is the biggest democracy, और इसका डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे के लिए जाना जाता है, और ये बहुत जरूरी है स्पेशली ऐसी जगहों पे जहां पर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जरूरत है, ओके, तो इट इज समथिंग दैट इज अ मस्ट, ओके, इट इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन प्लेसेस लाइक दैट, without political processes, a contestation of ideas and a sense that
elected representative can address the grievances of citizens, there cannot be any normalcy. Okay, जब तक ये नहीं होता है कि लोगों को लगे कि ये अ, अ, अगर पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं आता है वहां पर, ओके, जब तक पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं आता है वहां पर, तब तक ये सेंस कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमें हमारी दिक्कतों को सुनेंगे, हमारी इनजस्टिस को सुनेंगे और उसको एड्रेस करेंगे, ये ये फीलिंग नहीं आती है वहां के लोगों में, तब तक चीजें नॉर्मल नहीं हो पाएंगी। ओके, यस मैम। Yes. All right. So this is the entire editorial. Now let's. I hope the editorial is clear सबको कि क्या है, क्या बोल रहा है author और क्या. तो let's just ask one more question. Okay, before we conclude, let me just ask one more question. That is, you know what question it is. What is the tone of the passage? यहाँ पर poll तो conduct नहीं करा सकते हैं. तो what do you think is the tone of the author? Yes, it is assertive, definitely assertive, because the author is saying कि ये होना चाहिए और ये जब तक नहीं होगा तब तक चीजें सही नहीं होंगी. ओके, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं आएगा. Sorry. Okay, so it is assertive. It can also be persuasive. Yes. Argumentative हो सकता है. Okay, persuasive, argumentative दोनों भी हो सकता है. Okay. At the same time, advisory भी हो सकता है. Okay, that this should have been done, this should have been done, this should be done. Okay, so advisory भी हो सकता है. Okay, मैम इस चैनल पे रोज एनालिसिस होता है. Yes, अब से रोज हो रहा है. We just started again और अब रोज होगा. So I hope to see you all there. Concerned, perturbed is also correct. Yes. Concerned भी है author. Okay, concerned or perturbed. Suggestive, advisory is the same. Okay, suggestive या advisory both are like sort of the same. Okay, तो आप इनमें से ये सारे टोन हो सकते हैं. Okay, that is it for today. Thank you everyone for participating and thank you everyone for being present. I will see you tomorrow again sharp at 12. Not sharp, just saying sharp. But around sharp at 12. Okay, around sharp at 12. The most ambiguous statement that one can ever make, but here I am. All right, so that is it for today. Thank you so much, Dankeschön, everyone, and Mexi, Mexi, Mexi. Uh, yeah, sarcastic towards myself. Thank you so much, Aditya, and it was so nice to see you again. Please keep coming. Everyone, keep coming. All right. And I promise you, you will see some real, tangible changes in your um, studying and way of reading. All right. So that is it. Thank you. Bye-bye. Bye. गुरनूर देखती हूँ. आई विल ट्राई टू पुट वन लेक्चर बट आज तो शायद नहीं है, बट आई विल ट्राई टू सी इफ पॉसिबल. ओके, still there is some tentative chances that हो सकती है. Okay. वाह Ravneet, वाह. Bye Gurnur. Bye Kai. You too. Take care.